Hello everyone. So chapter number 13 probability, and today we are going to discuss theory topic, that is 13.2.1 properties of conditional probability. So in this we are going to discuss three basic properties and it is very easy, and basis on this there will be some numericals. Okay, so let us start. Before we start, we have to remember this, that p of x given y can be found by p of x intersection of y divided by p of y. Okay, so let us start. The first property is probability of s given f. What is s? S is the sample space, total sample space है, ठीक है. So s given f is equals to probability of f given f is equals to 1. तो हम सिर्फ पहले इस टर्म की बात करेंगे. We'll prove that this is equals to 1. Okay, so what I should write is p of s given f or s stroke f. As per this equation I can write it like this: probability of s intersection f divided by p of f. Right, now what is probability of s intersection f? So that will be probability of f divided by the probability of f, and that is how these two gets cancelled and my answer comes to 1. Now question is, how can I write that probability of s intersection f is p of f always, right? So for that I'll explain. Okay, let us consider an event of tossing two coins. Okay, so if I will write down its sample space, then it can be two heads, it can be ht, it can be th, or it can be tt. Okay, and let us say the f be the event. Okay, f be the event, at least वन h, एक हेड आया ऐसी ये इवेंट है. ओके, सो आउट ऑफ दिस सैंपल स्पेस I can write down the sample space for event f, and that will be hh, at least one head चाहिए, right? Okay, now if I will ask you to find out the intersection of f and s, then your answer will be इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है. Okay, so as you can see over here, h is common, ht is common, and th is common, and that is how I can write it h, ht and th, right? तो this is same as f, इन दोनों का सैम्पल्स पॉइंट्स है वो सेम है, and that is how f intersection s, या फिर आप लिखो f s intersection f is same as probability of f, right? तो इस तरह से आप एक एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है, now that is what we have proved, that the first point is proved, right? Now let us come to the second one, that is probability of f given f is equals to, so again I will write that probability of f intersection f divided by p of f, right? And we know that के f का intersection f से होगा, so all common points will be there, and that will be equals to probability of f upon probability of f, and the answer is 1. Hence we can say that probability of s given f equals to probability of f given f is always equals to 1. So that was very easy, right? You have to remember this part. Now let us discuss the second property. Okay, so in second property, if a and b are any two events of a sample space S, and f is an event of f such that p of f is not equals to 0. Okay, p of f है वो 0 नहीं है, right? Okay, then you have to prove this. ये कुछ ऐसा बड़ा सा इक्वेशन है. Okay, p of a union b given f is equals to p of a given f plus p of b given f minus
P of A intersection B given F. This is what you have to prove. This is part 1. Okay. और पार्ट 1 में ही एक स्पेशल केस लिया है कि इफ A and B आर डिसजॉइंट इवेंट्स देन दिस प्रूफ कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी सिंप्लीफाइड टू नंबर 2. ओके, तो ये हम बाद में देखेंगे, बट लेट अस प्रूव दिस फर्स्ट. ओके, सो अगेन बिफोर प्रूविंग दिस लेट अस रिकॉल दिस टू थिंग्स. ओके, एक तो हमें मालूम है कि P of X given Y can be given as P of X intersection Y upon P of Y. Second one that we discussed in our first 2 lectures, that was P of X union Y. Probability of X union Y can be represented as P of X plus P of Y minus of P of X intersection of Y. So let us start how to prove it. So I'm just writing it over here. So P of A P of A union B given F, right? This is my equation. Okay, so what I have to write for this? So I'll write P probability of A union B, and then after you will take its intersection. Okay, and then you divide it by P of F. So it is same as this. Okay, ये दोनों इक्वेशन हम वी हैव टेकन हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? A यूनियन B होगी. तो मैंने क्या किया कि x की जगह पे मैंने A यूनियन B रखा है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक y इज सेम एज f. ओके, so I hope it is clear. Now we are going to use the distributive law from the set. Okay, so how can I write this equation? Okay, इसको थोड़ा distributive law apply करके देखते हैं. Okay, so it will be A intersection F union B intersection F, right? Okay, and then I will divide it by P of F, right? Okay, now as you know, when we have a X union Y, then I can write down its individual probability minus P of X intersection of Y. तो आप इस इक्वेशन में A इंटरसेक्शन F को X इमेजिन करो. ओके, फिर ये यूनियन आ गया, एंड देन आफ्टर Y को आप B इंटरसेक्शन F इमेजिन कर लो. तो X की जगह आपको रखना है A इंटरसेक्शन B, Y की जगह आपको रखना है B इंटरसेक्शन F. सो नाउ व्हाट आई कैन राइट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन F प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन F माइनस P ऑफ, यहाँ पे x की जगह A इंटरसेक्शन F और y की जगह पे आएगा B इंटरसेक्शन F, राइट? तो यहाँ पे ये जो टर्म है A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन F, तो ये 3 टर्म्स है, 3 इवेंट्स है, उनका इंटरसेक्शन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट? डिवाइड बाई P ऑफ F. नाउ we can say that P of A intersection F divided by P of F plus P of B intersection F divided by P of F minus, over here I will write it like this, P of A intersection of B intersection with F divided by P of F. So if you will see this carefully, then it is P of A given F, second term is P of B given F minus, and what is this? So you can see that it is, आप इसको थोड़ी देर के लिए x इमेजिन कर लो. Okay, so it will be like P of A intersection B given F, right? So this is how you can prove it. Now let us take the second case. Second case is, in particular, if A and B are disjoint events, then
यू हैव टू प्रूव दिस. अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट दिस टर्म इज नॉट प्रेजेंट, राइट. तो अभी डिसजॉइंट इवेंट्स के बारे में एक बात कर लेते हैं. सो आई हैव रिटन द सेम इक्वेशन, फर्स्ट वाला जो था वही लिखा है. ओके. देन व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब ए एंड बी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है. व्हेन वी आर सेइंग दैट इट इज डिसजॉइंट इवेंट, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो नल होता है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0, राइट. ओके. सो वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ दिस. आप इस इक्वेशन में ए इंटरसेक्शन बी है उसकी वैल्यू है वो 0 हो जा रही है. दैट मीन्स दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी 0. सो आई कैन राइट दिस. ओके. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी given f is equals to 0, and thus I can say that p of a union b given f is equals to p of a given f plus probability of p of b given f, right. तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी 2 में पार्ट 2 है. यू कैन प्रूव इट लाइक दिस फॉर डिसजॉइंट इवेंट्स ओनली. ओके. नाउ द थर्ड property, property is again very easy. ओके. आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट. ओके. सो लेट अस से एक इवेंट है ई. ओके. आई एम हैविंग अ कॉइन और इवेंट ई है हेड आने के चांसेस. ओके. एक ही बार हम कॉइन टॉस कर रहे हैं. ओके. और हेड आने के क्या चांसेस है? दैट इज इवेंट ई. ओके. सो व्हाट इज ई डैश? ई डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट. मीन्स के टेल आने के क्या चांसेस है? दैट इज नोन एज अ ई डैश, राइट. सो लेट अस प्रूव दिस. P of E dash given f can be given as, over here we are going to use the first property से हम start करेंगे. सॉरी ये यहाँ से P of S given f. okay, we'll start with the property number 1. so what was its value? so it was P of S given f is equals to 1 था, right. okay. now if we consider a total sample space, then we understand that it will include the event E as well as event E dash. okay. so if I want to put it, then I can represent it as can be given as E union E dash. okay. तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रख रहे हैं S की. ओके. टोटल सैंपल स्पेस की. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ S की जगह पे हमने लिखा E union E dash slash f is equals to 1, right. now I can separate them out like this. P of E given f plus P of E dash given f is equals to 1. why we have written like this? बिकॉज E एंड E डैश आर डिसजॉइंट इवेंट. डिसजॉइंट क्यों है? क्योंकि एक सिर्फ बता रहा है हेड के बारे में, दूसरा है वो टेल के बारे में बता रहा है, एंड दे आर डिसजॉइंट इवेंट. एंड फॉर डिसजॉइंट इवेंट्स आई कैन यूज द प्रॉपर्टी 2. ओके. प्रॉपर्टी 2 में जो डिस्कशन किया उससे रिलेटेड है, राइट. सो दैट इज प्रॉपर्टी 2. नाउ फ्रॉम दिस आई कैन से दैट P ऑफ E डैश given f can be given as 1 minus probability of E given f. so I can say that I have proved it, right. property number 3. okay. so एक बार जस्ट समरी कर लेते हैं. अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए, राइट. P of S given f equals to P of F given f is equals to 1. if A and B are disjoint events, then you have to remember this equation. if nothing is specified, A and B disjoint है या नहीं है, कुछ specified नहीं है, then I will use this equation. and if it is P of E dash slash F, then 1 minus P of E slash F. तो ये 4 इक्वेशन आपको यूज करना है. ओके.
Thank you.